Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a young, really ambitious professional. For the better part of their 20s, they have been pouring literally every ounce of their energy into building this thriving, fast-paced tech startup. Right, like total dedication, sleepless nights, the whole 9 yards. Exactly. Building it entirely from scratch. They are their own boss. They're making a name for themselves in this highly competitive market. And importantly, they are completely independent of their family. Doing their own thing. Yeah. And then suddenly they receive a call. Oh, wow. The call. The call. It is a call they perhaps always knew was coming, but never really prepared for. It's time to leave their flourishing startup behind, pack up, and return to their hometown to run their parents' legacy manufacturing business. That's quite a pivot. It is. And you have to ask yourself, why would they ever say yes? Like, why walk away from something you built with your own two hands? It doesn't make logical sense at first glance, does it? Not at all. And then if you flip the perspective entirely, look at it through the eyes of the parents. You are looking at your life's work, right? The business that put food on the table for decades. Yeah, your legacy. Exactly. And you have to wonder, is this fiercely independent, rebellious startup founder, as someone who is, used to breaking the rules and doing things their own way, is that really the safe pair of hands you need to protect the family legacy? It is an incredibly fraught scenario. I mean, we naturally assume that starting a successful business is this ultimate declaration of independence, right? Like a permanent departure from the family nest. Right. But the reality of intergenerational succession is it's far more complicated than a simple binary choice. It hinges entirely on this very delicate, highly strategic push and pull between the generations. And exploring that exact dilemma is our mission today. We are basing our discussion on this really rigorously peer-reviewed article published in the prestigious Journal of Management Studies. Oh, excellent. An FT50 listed journal. That is top tier. It really is. And we are looking at the work of an incredible team of scholars. We've got Philipp Sieger from the University of Bern and Jasper Brinkerink from the University of Edinburgh. Both fantastic researchers in this space. Definitely. Alongside Massimo Baù from Jönköping University, Johan Karlsson, who is also from Jönköping University, and Svensk Näringsliv and Alfredo De Massis. Yeah. His affiliations are just everywhere, spanning the Universidade de Estudi Denuncio Chieti Pescara, IMD Business School, Lancaster University, and Zhejiang University. The level of theoretical framing that specific team brings to this intergenerational dynamic, it completely reshapes how we view this critical life juncture. It really does. But before we start unpacking the nuances of their findings, there are a few important updates to share with you all regarding our schedule and some exciting developments in the academic community. Yes, some good housekeeping. Right. So as of March 2026, we have officially shifted to a weekly release schedule. We're publishing on Sundays and Mondays now. Which has been a great rhythm, I think. It has. Sundays are dedicated to classic papers or book reviews, while our Monday releases, like this one, will keep the focus strictly on top-tier, peer-reviewed journal publications. And we really owe a massive thank you to our loyal subscribers for supporting this initiative. We really do. And, there is a very deliberate reason for limiting our releases to just 2 days a week. Yeah, this is important to mention. The AI-assisted production tools we utilize, they are incredibly resource-intensive. Very heavy on the environment. Exactly. They require considerable water intake by back-end data centers for cooling. So limiting our weekly release is, it's our way to actively give back to climate change initiatives. Right, ensuring we remain environmentally conscious without losing the richness and depth of these intimate academic discussions. It's a balance, but a necessary one. For sure. Now, continuing with that theme of academic growth and community, we actually have 2 exciting announcements for our listeners today. Oh, right, the conference details. Yes. First, if you're planning to participate in person at the Academy of Management 86th Annual Meeting in Philadelphia, USA. A great city for a conference, by the way. Absolutely. We highly encourage you to register for the Professional Development Workshop, or PDW, on the space economy. That sounds fascinating. Who is heading that up?
It is being spearheaded by Dr. Mehdi Montakabi of Said Business School at Oxford University. Oh, wonderful. And full disclosure, our own show producer, Mayukh Mukhopadhyay, is an active contributor to this multidisciplinary and highly entrepreneurial PDW. The link to register is right there in the show notes. That's great. I know Mayukh has been doing some incredible work lately, and our second announcement is specifically aimed at early career scholars and PhD students, right? Yes, exactly. The Academy of Management SIM division, that's Social Issues and Management, has quietly started this brilliant new monthly initiative called AOM SIM-Bytes. SIMBytes, I like that. Starting this month, June 2026, they are releasing these reel-styled short videos featuring senior scholars and faculty members. Short-form content for academia, that's so smart. Who is the first guest? The very first YouTube short features Professor Ed Freeman. Oh, wow. The father of stakeholder capitalism himself. The very same. This initiative is being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. And again, our producer, Mayukh, has been volunteering actively with the SIM committee leads for the past year, helping plan the content design and edit the initiative. That is fantastic. We should also give credit where it's due for the idea itself. Yes, absolutely. We want to highlight the brainchild of this initiative, Professor Sheldine Simila from Trent University in Ontario. And the current committee chair executing it forward is Professor Jennifer Griffin from Loyola University, Chicago. Yes. You can find the link to the AOM SIM-Bytes in the show notes as well, so definitely check that out. Highly recommended. And of course, we strongly urge you, the listener, to make time to read the thoughtfully crafted article we are discussing today. The link is right there for you. So, for a listener who might be, completely new to academic research, maybe someone just about to start their own research journey or a PhD program, how do we set the stage for what this paper is actually exploring? Let's frame it as a very specific, very intimate family negotiation. The paper is essentially asking this. If a child goes off and starts their own independent business, does that make them more likely or less likely to eventually come back and take over their parents' family business? It's the ultimate will they or won't they? Exactly. And the researchers introduce what they call a dual agency tension. Right, dual agency, meaning both sides have a say. Yes. For a succession to actually happen, both the parents and the child have to agree. They both hold agency. But the catch is that the very skills and experiences that make the child look like an incredibly attractive and capable successor to the parents might also give that child so much outside success that they simply aren't willing to return home. Exactly. It's a paradox. That dual agency framework, it is the linchpin of the entire study. Because to appreciate why this is such a breakthrough, we really have to look at how the traditional literature on family business succession has historically operated. Right, because it wasn't always viewed this way. Not at all. For decades, research has treated succession as if it only happens from one perspective at a time. It's wild. You have one massive body of literature focusing entirely on the parents. Just looking at what the parents want? Exactly. It asks, what makes a child an attractive candidate? The parents are scrutinizing skills, formal education, specific industry experience, leadership qualities. They want absolute certainty that the firm will survive in the hands of the next generation. Which makes sense from a risk management perspective. Sure. And when completely isolated from that, you have a separate body of literature looking at the child's perspective, focusing on what makes the child willing to take over. The emotional side. Yes. That research zeroes in on emotional loyalty, psychological identification with the family legacy, a sense of familial obligation. But looking at attractiveness in a vacuum, or willingness in a vacuum, that just seems like a massive blind spot. I mean, how did researchers justify separating the two for so long? Well, methodologically, it is just easier to study one dependent variable at a time. You survey the parents about what they want, or you survey the children about how they feel. So it was a convenience thing. Essentially. But as the authors of this paper argue, succession doesn't happen in a vacuum. It is a real-time, messy negotiation. The blind spot occurs because we ignore how a single early career experience might pull these two agencies in completely opposite directions. Okay, let me try to contextualize this with an analogy, maybe looking at corporate recruiting. Okay, let's hear it. Imagine a company sends their best mid-level manager to a top-tier university to get a highly specialized, really rigorous MBA. Happens all the time. Right. The goal is straightforward. The employee gains advanced skills and becomes a better, more capable leader for the company.
But by earning that elite MBA, the employee suddenly becomes incredibly attractive to rival companies. Oh yeah, headhunters are calling. Exactly. Rivals who are willing to offer triple the salary and a C-suite title. So the very thing that made them an attractive candidate internally is the exact thing that destroys their willingness to stay because their outside options have expanded so drastically. That is a perfect corporate analogy. It mirrors the theoretical friction perfectly. If researchers only looked at attractiveness, they would say the MBA was a huge success. But the company still loses the employee. Exactly. And in the family context, if a child's early career experience is simply demonstrating loyalty, for instance, working in the family warehouse since they were 15, that experience increases both their attractiveness to the parents and their willingness to stay. The two align. Right, because they don't have those outside options. Precisely. But traditionally, parents want their children to gain outside experience before taking over. They encourage preparatory paths like taking a formal corporate internship, getting a specialized business degree, or working a mid-level job at a non-family firm to learn how professional hierarchies operate. But what if the child takes a highly self-directed path? What if, instead of taking a safe corporate job to learn the ropes, they decide to fly solo and become an entrepreneur? Which changes everything. Right. They aren't just learning a marketing function or a finance function. They are building a company from the ground up. When an offspring chooses to found their own venture, they are engaging in a process that uniquely prepares them for the demands of running a family business. This makes them highly attractive to the incumbent parents. Because they've proven they can lead. Yes. However, because entrepreneurship is self-directed and often highly rewarding, it simultaneously creates credible, lucrative career alternatives outside the family firm, which naturally potentially lowers their willingness to return. So the real question becomes, does founding a startup turn the child into the prodigal returning hero, equipped with all these new skills to save the day, or does it mean they're gone for good, just lost to their own success? That is the central tension. And that brings us directly to the first major hypothesis of the paper, exploring the double-edged sword of what the authors call entrepreneurial human capital. To fully grasp this, we need to view it through the lens of human capital theory. This was pioneered by economists like Gary Becker and Theodore Schultz back in the early 1960s. Because before them, capital usually just meant money, factories, or machinery. Exactly. Becker and Schultz argued that the knowledge, skills, and competencies an individual acquires are also a form of capital. It makes them more productive in future roles. It's investing in the person. Yes. Building on this, the authors of our paper define entrepreneurial human capital, or EHC. This is a specific, really potent bundle of transferable cross-functional capabilities that you can only build by founding and running a business. It is vital to separate EHC from standard professional experience, I think. Like, if I take a job as a marketing director at a large corporation, I am learning a very specific, siloed function. You're learning your lane. Right. I learn how to allocate an ad budget, maybe manage a team of 10 people, and report to a VP, but I am fundamentally protected by the corporate hierarchy. If the company's product fails and the firm goes bankrupt, I lose my job, sure, but I don't lose my personal savings or my house. And that is the key difference. The absence of a safety net is the defining characteristic of EHC. Conventional early career jobs teach you how to operate within an existing structure. Right. Entrepreneurship teaches you how to build the structure itself, how to secure the financing for it, and how to shoulder absolute legal and financial accountability if it collapses. Which is terrifying, honestly. It is. By founding a business, the offspring learns how to acquire and coordinate scarce resources, how to engage in high-level strategic planning, and how to manage incredibly diverse stakeholder relationships, from angry customers to demanding investors. They are the final backstop. Most importantly, they learn the profound psychological weight of ownership. They are learning leadership by doing in the most unforgiving environment possible. And a mature family business requires exactly that kind of leadership. I mean, when parents are looking for a successor, they don't just need a capable middle manager, they need a steward. Yes, a steward. You need someone who understands what it feels like to hold the ultimate risk and the ultimate responsibility. Because these EHC skills perfectly map onto the demands of running a mature family business, the authors propose Hypothesis 1. In the context of parent-child succession, offspring with early career entrepreneurship experience
are more likely to become successors than those without such experience. The sheer magnitude of their EHC makes them uniquely attractive in the eyes of the incumbent parents. Exactly. But I have to push back here, because the data they found to support this hypothesis is just startling. They state that offspring with entrepreneurship experience are approximately 83% more likely to become successors than those without it. Yes, 83%. 83%. That seems almost impossibly high. Aren't kids who start their own businesses exactly the ones who want nothing to do with their parents' rules? Are we sure that taking the rebellious path actually makes them that much more likely to come back? It is a massive effect size, and your skepticism highlights exactly why this finding is so disruptive to the older literature. Okay, how so? Well, for a long time, the academic consensus, and even just the prevailing societal assumption, was a strict dichotomy. Should I stay or should I go? Founding a startup and succeeding a family business were viewed as mutually exclusive career paths. Like, you do one or the other. Right. If a child started a tech company, the parents might have viewed it as a rejection of the family legacy, a detour, or a permanent severing of ties. A slap in the face, almost. Sometimes, yeah. But the 83% figure proves that early career entrepreneurship is not a detour at all. It is structurally the most effective preparatory path towards succession. The parents look at this child, who has proven they can survive the crucible of entrepreneurship, and their desire to have that child run the legacy overrides any past friction. I mean, I understand why the parents want them, but if I am that child and I have proven I can build a company from nothing, why on earth would I go back? Right. What's the motivation? If I am making millions in my own startup, if I have my face on industry magazines and total control over my destiny, why would I return to my hometown to run my parents' medium-sized logistics firm or regional plumbing supply company? Doesn't my success make me fundamentally too expensive for my parents to hire back? That too expensive to hire dynamic is the crucial pivot of the entire study. The authors acknowledge that while EHC makes the offspring incredibly attractive to the parents, it simultaneously arms the offspring with highly lucrative outside options. The double-edged sword. Exactly. And this introduces the concept of opportunity costs, which drives hypotheses 2A and 2B. This is where the researchers measure the literal and figurative price of coming home. Okay, opportunity cost. It's a fundamental economic principle. It is the value of the next best alternative you have to give up in order to take a certain action. The road not taken. Right. Like, if I choose to go to a movie tonight, the opportunity cost is the work I could have gotten done or the sleep I could have caught up on. If you have a highly successful, rapidly growing startup, the opportunity cost of abandoning it to run your parents' traditional business is staggering. Staggering. Opportunity structures are certainly economic, how much salary or equity you are walking away from, but they also heavily reflect comparative utility. What does that mean in this context? It involves room for professional growth, autonomy, and social status. The authors isolated this tension by looking at two specific metrics regarding the offspring's independent venture, its financial performance and the dynamism of the industry it operates in. Let's start with performance. Okay. Hypothesis 2A posits that the better the offspring's venture performs, the less likely they are to succeed the family firm. And the empirical data emphatically supported this. The precision of their metric is really fascinating to me. They measured the offspring's venture performance by looking at return on assets, or ROA, relative to their industry peers. A very standard, very solid financial metric. And they discovered that for each percentage point the offspring's venture outperforms its industry peers, their likelihood of becoming a successor drops by 25.6%. Yeah. Just 1 percentage point of overperformance wipes out a quarter the likelihood of them returning home. That is insane. The steepness of that drop makes perfect sense when you unpack the psychology of a successful founder. If your startup is highly profitable, you are generating direct financial returns that likely far exceed whatever the family firm can offer you in a starting executive salary or future ownership dividends. The money's just better on your own. Usually, yes. But the psychological cost is arguably even heavier. Running a successful venture provides profound personal fulfillment. You possess absolute autonomy. You have reputational capital. You're the boss. Out in the market, you are known as the founder, the visionary, not as the boss's kid who inherited the corner office. Oof. That's a huge distinction. It really is. Your success signals to the world your ability to create value entirely on your own terms. So if your venture is outperforming the market, your opportunity cost of succession is sky high.
You stand to lose too much, both economically and symbolically, by returning to the family fold. It is the ultimate flex. If you are winning the game you invented, there is zero incentive to go play someone else's game, even if that someone else is your family. Exactly. Why downgrade your autonomy? But the researchers also looked at the environment the startup was in. Correct. Hypothesis 2B focused on venture industry dynamism. Right. The logic being, if the Offspring's venture is in a fast-paced, highly dynamic industry like cutting-edge software, biotech, or artificial intelligence, they hypothesized the child would be less likely to return to the family firm, which might be in a slower, more traditional manufacturing or agricultural sector. That was the assumption. Yet, the data rejected this hypothesis. The rejection of hypothesis 2B is a critical nuance. The data showed that simply being in a dynamic industry did not automatically reduce the likelihood of the offspring returning to the family firm as a standalone effect. I struggle to wrap my head around that. I mean, if I am used to the adrenaline of a fast-paced tech startup where the market paradigm shifts every 6 months, wouldn't I be bored to tears going back to a stable, slow-moving paper mill? Yeah. The cultural whiplash alone seems like it would be a massive deterrent. It sounds counterintuitive, right? Operating in a dynamic industry means your day-to-day survival depends on rapid adaptability, constant innovation, fast execution. You become conditioned to that pace. Totally conditioned. So why doesn't that conditioning automatically prevent succession? Because as the authors discover later in their interaction models, being in a dynamic sector doesn't mean you won't return to a traditional sector unless there is another missing piece of the puzzle. So there's a caveat. A big one. The context of the family firm matters immensely in determining if that transition is viable. But before we get to the family firm's role, think about the Machiavellian family dynamics this performance metric creates. Oh, man. The human element here is wildly complicated. If a parent knows that a highly successful startup acts as a massive magnet, pulling the child away, dropping the succession likelihood by 25.6%, for every point of overperformance, does a parent secretly hope their child's startup is only moderately successful? It's a dark thought, isn't it? It is. You can imagine the parent saying, I hope you learn a lot and build some great skills, honey, but please don't become a unicorn billionaire because then you'll never come home to take over the family bakery. It places the parent in an agonizing position where they are rooting for their child's education, but quietly rooting against their absolute triumph. It is a very real, deeply emotional paradox. The parent deeply desires the child to gain that entrepreneurial human capital, knowing it will secure the family legacy. But they are acutely aware that too much external success threatens the internal succession plan. The child becomes, quite literally, too expensive to hire. Which begs the ultimate question. If a wildly successful startup is pulling the child away, how does the parent's business fight back? What mechanisms can the family firm deploy to increase its own magnetic pull and mitigate those massive opportunity costs? This introduces the interaction effects the authors explored. They theorized that the characteristics of the parent's business interact directly with the characteristics of the child's business to shift the calculus. Okay, so it's not just about the child's success in a vacuum anymore. Precisely. Yeah. The authors theorized that the performance and the dynamism of the family firm itself could offset the opportunity costs for the offspring. A well-performing family business signals long-term stability, higher economic returns, and lower personal risk. It's a safer bet. Right. It acts as an opportunity cost mitigation device. So they proposed hypothesis 3A that strong family firm performance would positively moderate meaning. It would weaken the negative effect of the offspring's venture performance. So, in simple terms, if the child startup is highly profitable, but the family firm is also highly profitable, the wealth and success of the family firm will neutralize the child's outside success, making them more likely to return. That was the theory. But the data completely rejected hypothesis 3A. A highly profitable family firm does not offset a highly profitable startup. It does not. If the kid is making a fortune on their own, it doesn't matter how incredibly rich the family business is, they aren't coming back. But surely, if the family firm offers them a massive equity stake and a 50% pay bump, wouldn't rationality dictate they take the better financial deal? If human beings were purely rational economic calculators, yes. But we aren't. Far from it. The rejection of this hypothesis suggests that financial rewards alone are fundamentally insufficient to buy someone out of the profound autonomy of running their own successful creation. It's about pride. It's identity. If you have built a high-performing venture from scratch, the psychological and reputational capital you have earned is deeply entwined with your identity.
A highly profitable family firm can offer you matching money, or even more money, but it cannot offer you the status of being the sole independent founder. The psychological cost of giving up your own successful enterprise is just too high, regardless of the family firm's overflowing bank account. It is a powerful testament to the value of creative autonomy. Money can't buy them back if they are already successful. However, the data revealed a fascinating twist with Hypothesis 3B. This hypothesis looked at the interaction between the dynamism of the Offspring's venture industry and the performance of the family firm, and this one was supported. This is perhaps the most elegant integration of variables in the entire paper. Remember how earlier we noted that just being in a fast-paced, dynamic startup industry didn't automatically stop a child from coming home? Yes, the rejected 2B hypothesis. Exactly. Hypothesis 3B explains exactly why. If a child builds a startup in a highly dynamic, rapidly changing industry, their decision to return is entirely contingent on the family firm's performance. Okay, walk me through that. If the family firm is performing well, it actively attracts the offspring back, even if that family firm operates in a boring, traditional, stable industry. Okay, let me try to map this out visually. It is like comparing two different biomes. Ooh, I like biomes. Let's say I'm used to the fast-paced, hyper-competitive jungle of a tech startup. That is my dynamic industry. I am accustomed to swinging from vines, adapting to sudden threats, and moving at breakneck speed. Right, high adrenaline. Now, my parents want me to move to the quiet, stable plains of the family agriculture business. I will only make that drastic environmental move if the soil in those plains is incredibly rich and fertile, meaning the family firm has high performance and high profitability. And why is the soil so important? Because rich soil means the family business has the financial resources, the organizational slack, and the stability to let me plant my own new ideas. I can become an entrepreneur. An entrepreneur, yes. I can bring my dynamic jumble skills and innovate within the traditional family structure. I can launch a new digital division or modernize the supply chain. But if the family business is struggling, if the soil is dry and poor, I will stay in the jungle because I won't have the resources or the freedom to innovate if I go home to a dying company. That biome analogy captures the exact mechanism at play beautifully. A highly performing family firm signals to the entrepreneurial offspring that the firm has the capacity to absorb and fund change. It's an incubator. It tells them, you don't have to stop being an entrepreneur when you come home. You just get to be an entrepreneur with a bigger, more stable war chest. It significantly reduces the perceived mismatch between the fast-paced environment they're used to and the traditional environment they are entering. That makes total sense. If the family firm is highly profitable, it isn't viewed as a graveyard for their ambition. It is viewed as a well-funded platform for their next stage of growth. So, to round out the hypotheses, the authors also looked at the dynamism of the family firm's industry. Hypotheses 4A and 4B. Did it matter if the family business was also in a fast-paced tech sector? Did matching the industry speeds make a difference? Interestingly, no. Both hypotheses 4A and 4B were rejected. Really? The dynamism of the family firm's industry didn't significantly change the offspring's calculus regarding their own venture's performance or dynamism. The data implies that the sheer profitability and performance of the family firm is a much stronger, more reliable signal of resource availability than the industry it happens to operate in. So, a highly profitable traditional manufacturing firm is far more attractive to a tech founder than a struggling tech firm owned by their parents. Exactly. Cash is king when it comes to funding innovation. These nuanced findings paint a picture of a highly rational, highly strategic negotiation happening in the minds of these young entrepreneurs. But as anyone listening who is familiar with social science research will immediately ask, how do we know this is actually true? Ah, yes. The methodology check. It is incredibly easy to look at a correlation and falsely assume causation. How did the authors prove these complex dynamics without accidentally comparing apples to oranges? Let's take a behind-the-scenes look at the methodology, because this study is a masterclass in rigorous research design. The methodology here is staggering in its scope. The researchers didn't rely on a quick cross-sectional survey of a few hundred people. They utilized total population data from Sweden spanning nearly 2 decades, from 2001 to 2019. Entire population data, that's huge. But before we discuss the statistics, we need to understand why Sweden is the absolute perfect laboratory for isolating this specific question of succession. Because cultural context matters immensely when we talk about family dynamics and obligation.
Precisely. If you want to study the dual agency process, the idea that the child has a genuine free choice to say yes or no to taking over the business, you need an environment where the child actually possesses that freedom. And Sweden provides that. It does. Sweden is characterized by a highly egalitarian, non-discriminating culture with very low power distance and high individualism. This cultural backdrop perfectly isolates the dual agency process. As opposed to, say, a highly collectivist culture. Exactly. In a highly collectivist culture, or a culture with strong, rigid norms of forced primogeniture, where the eldest child must take over regardless of their personal desires, the child's agency is heavily constrained. Right. The choice isn't really theirs. In those societies, the opportunity costs we just discussed might not matter at all, because familial duty entirely overrides economic rationality. But in Sweden, the data is free from the noise of forced cultural obligation. The child's choice to return is truly their own. And the data sets they utilized are incredibly robust. They combined official administrative records maintained by Statistics Sweden. What kind of records? Well, they used the LISA database for exhaustive labor market data tracking, where people live, their exact education levels, and their occupation history. Okay. They used the FDK database for detailed firm financials, tracking profitability, assets, and growth. And critically, they used the RTB registry to perfectly identify all family ties across the entire Swedish population. So no self-reporting bias. Exactly. They aren't relying on surveys where an offspring might misremember their startup's revenue or exaggerate their reasons for returning. They are looking at hard, objective tax and registry data for the entire country over 18 years. Which brings us to the methodological magic of this paper. Coarsened exact matching, or CEM. This concept is crucial to understand. It really is the bedrock of their causal claims. When you are comparing offspring who became entrepreneurs versus those who didn't, you face a massive selection bias problem. What if the kids who chose to start businesses were already fundamentally different? Which they usually are. Right. Maybe they were older or had master's degrees or lived in wealthier metropolitan areas with better networking. If those entrepreneurial kids later become successors, is it because of the entrepreneurship experience? Or is it simply because they were older, better educated, and lived in Stockholm? It is the classic correlation trap. It's like trying to figure out if wearing a specific brand of expensive running shoes makes you a faster runner without checking if the people buying those $300 shoes are already professional athletes. Great analogy. If you don't isolate the variable, your conclusions are useless. So how hard is it to find perfect matches in a population data set to solve this? It is a monumental logistical feat. CEM solves the selection bias by creating an artificially balanced sample. The authors took the 4,137 offspring who had entrepreneurship experience, and they searched the entire Swedish population database to find 4,137 non-entrepreneurial offspring who were exact organizational twins. Exact twins. Yes, they matched them identically on age, gender, level of education, the specific municipality of residence, the number of siblings they had, and the exact year of the succession event. That is wild. By holding all of these background covariates completely constant, they ensured that the only major difference between the two groups was the presence of entrepreneurship experience. That is fascinating. It's like finding your exact twin in a parallel universe to see how one single variable changes your life path. It guarantees you aren't falsely attributing a behavior to entrepreneurship when it was actually caused by the fact that the person happened to be an only child or had a PhD. Once they constructed this perfectly balanced sample, they employed a survival analysis, specifically a Cox proportional hazards model. Okay, that sounds intense. It's an analytical method originally developed in the medical field to estimate the probability of an event like a patient surviving a disease occurring over time. In this context, the survival event is the moment the offspring takes over the family firm. It is particularly brilliant because it accounts for a statistical challenge called right censoring. Let's delve into right censoring because it sounds intimidating, but it addresses a very practical problem. Imagine you are tracking a group of potential successors from 2001 until the end of the study period in 2019. Some of those offspring haven't taken over the family firm by the time the clock runs out in 2019. Right, they just haven't decided yet. Does that mean they never will? No, it just means the researchers had to stop collecting data. If you treat those people as failures or assume they will never return, you severely bias your data. I see. Right censoring
allows the statistical model to gracefully account for the fact that the succession event might still happen after the observation window closes, preventing the results from being artificially skewed toward early, immediate successions. That is an incredibly elegant way to handle the reality of time and research. But there is one more villain of academic research the authors had to defeat, and it is the trickiest one: endogeneity. The dreaded endogeneity. This is the classic chicken or the egg problem. Did the child start a business to practice for the succession they knew was coming, or did they start a business to escape it? If they only started the business because their parents promised them the CEO chair in 5 years, then the entrepreneurship didn't cause the succession. The guaranteed succession caused the entrepreneurship. Addressing endogeneity is where this paper elevates itself to top-tier scholarship. To solve the chicken or the egg problem, they used an instrumental variable approach. How does that work? They needed to find a variable that strongly predicts whether a child will start a business, but has absolutely no direct effect on whether they will eventually take over the family firm. They selected regional startup activity, measuring how vibrant the local entrepreneurial ecosystem is in the specific municipality where the child lives. Oh, that is clever. If you live in a city with a booming startup culture, abundant venture capital, and networking events, you are heavily exposed to opportunities, making you statistically much more likely to start a business yourself. But your local city's overall startup rate has absolutely nothing to do with the internal family dynamics or the succession plans of your parents' specific company. By using that regional proxy, they proved mathematically that the entrepreneurship experience was driving the succession likelihood, not the other way around. Bulletproof. They also conducted an alternative robustness check that I found incredibly illuminating. They took the exact same statistical model, but instead of testing entrepreneurship experience, they tested years of education as the human capital variable. And what happened? The results yielded no significant interactions with the opportunity cost variables. Getting a master's degree or spending 4 extra years in academia does not create the same complex push and pull, independence versus obligation dynamic that starting a business does. It definitively proves that entrepreneurial human capital is a totally unique phenomenon. The methodological rigor deployed here, combining total population data, exact mathematical matching, survival analysis, right censoring, and instrumental variables, it gives us immense, undeniable confidence in these findings. We are not looking at theoretical speculation. We are looking at empirically proven, deeply human behavior mapped across an entire nation. So, with rock-solid methodology backing up a highly novel theoretical framework, what are the ultimate lessons we can take away from this comprehensive analysis? Let's distill the key takeaways for academics, for practitioners, and explore some provocative future thoughts. For academics and researchers, the primary takeaway is the absolute non-negotiable necessity of using a dual-agency framework moving forward. You can't just look at one side anymore. You simply cannot look at successor attractiveness without simultaneously modeling successor willingness. They are inextricably linked. And as this paper proves, early career experiences that aggressively enhance one can severely undermine the other. Furthermore, this research brilliantly bridges 2 historically isolated fields: family business succession and transgenerational entrepreneurship. It shows they're actually deeply connected. It demonstrates that venturing outside the family firm isn't a rupture in the family fabric. It is a critical structural mechanism for building the next generation's strategic capabilities. And what about for practitioners? If you are a parent listening to this, staring at your own legacy business, what should you do? The clear empirical messages: do not panic if your child wants to start a business instead of immediately joining your firm. Let them go. Yes, do not view it as a rejection of your life's work. Letting them fly solo builds the exact strategic, resilient, accountable leadership skills you desperately want them to have. Let them go build that entrepreneurial human capital in the crucible of the open market. But be ready for when they succeed. Yes, and this is a massive bet. Be prepared. If they are highly successful out there, you are going to have to work incredibly hard to win them back. You have to make your family firm, an attractive, high-performing environment that can absorb their dynamic energy and fund their new ideas. You can't just rely on guilt or duty. You cannot just expect them to come back out of a sense of familial duty if you are asking them to take a massive step backward in their career trajectory and autonomy. That is the essential lesson for incumbents. And for the offspring listening, your startup is not a detour. It is a highly valid, empirically proven preparation path.
You're building the exact skills that will make you an invaluable leader, whether you eventually choose to stay with your startup or return to modernize the family legacy. What about educators? For educators, particularly those designing curriculums for entrepreneurship or family business programs, the approach needs to evolve. We need to help students from business-owning families see how their independent startup dreams and their long-term family obligations can intersect and complement each other, rather than presenting them as a binary either-or choice. It is a profound shift in perspective that touches on economics, psychology, and family dynamics. But of course, a great paper always leaves us with curious questions that aren't fully answered by the text. It leaves us with something complex to chew on. Always more research to do. For instance, we discussed how Sweden was the perfect laboratory precisely because of its highly individualistic culture. How does this entire dynamic shift in deeply collectivist cultures where parental authority heavily outweighs offspring agency? Oh, that is a fascinating angle. If a child in a traditional collectivist society in Asia or the Middle East builds a highly successful dynamic startup, do they still experience that 25.6% drop in succession likelihood per point of overperformance? Or does profound filial piety and cultural duty override the economic opportunity cost entirely? That is a phenomenal avenue for future research. And what happens when we look at family structure? This study explicitly looked at families with multiple children to ensure there was variation and potential sibling competition. Right. If you are an only child, how does the complete lack of sibling competition alter your calculus? Do you still feel the need to go out and build a startup to differentiate yourself? Or do you fly solo simply to build legitimacy? Prove that you aren't just the spoiled heir. Exactly. Perhaps an only child feels they must prove to the existing non-family employees that they aren't just an entitled heir, that they actually earned their leadership stripes in the unforgiving open market. Building legitimacy among the veteran staff is a massive hurdle for any successor. And finally, what happens after the succession actually takes place? The post-succession reality. Let's say the biome is rich, the soil is fertile, and the jungle-dwelling tech founder comes home to run the family manufacturing firm. How do the incumbent parents, who are deeply entrenched in doing things a certain way, actually integrate the fiercely independent, move fast and break things entrepreneurial energy of their returning child without completely clashing? That is the real test. Reintegrating that dynamic, disruptive energy into a legacy firm with established systems has to be a fascinating, potentially explosive behavioral challenge of its own. The post-succession integration phase is where the real test of that acquired entrepreneurial human capital occurs. It is one thing to acquire the skills in a vacuum. It is an entirely different challenge to deploy them in an environment heavily laden with family history, emotional baggage, and legacy systems. Well, those are some incredible, provocative questions for all of us to mull over and explore on our own. It brings us right back to that opening image, doesn't it? The founder by the window. That young founder, staring out the window of their successful startup, holding the phone, listening to their parents ask them to come home. It is not just a binary choice anymore. The diagnostic landscape of family succession isn't a clean black and white X-ray. It is a complex, beautiful, and deeply human negotiation of acquired skills, personal pride, and economic opportunity. It is a delicate negotiation that ultimately shapes not just individual families, but the longevity and innovation of entire economies. We want to gently thank you, our listener, for joining us on this intimate exploration of such a fascinating topic. We hope this conversation has given you a new, rigorous lens through which to view the dynamics of family, business, and independence. And remember once again to check the show notes for the link to this incredible paper. Yes, and the link for the AOM PDW on the space economy in Philadelphia, and the link to the wonderful AOM SIM-Bytes initiative. Have a wonderful rest of your day, and keep exploring. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটু কল্পনা করুন তো, ধরুন একজন তরুণ উদ্যোক্তার কথা, দিন নেই রাত নেই খাটছে। একদম, যাকে বলে স্টার্টআপ লাইফ আর কি। ঠিক তাই, সপ্তাহে টানা ধরুন ৮০ ঘন্টার উপর হাড়ভাঙা খাটুনি, নিজের একটা স্টার্টআপ দাঁড় করানোর এক চরম রোমাঞ্চকর লড়াই চলছে। হ্যাঁ, আর তার সাথে ইনভেস্টরদের সাথে একের পর এক মিটিং, নির্ঘুম রাত। ঠিক।
মানে অনিশ্চয়তার সাথে একেবারে নিত্যদিনের বসবাস। কিন্তু এত কিছুর পরেও নিজের হাতে গড়া এই যে একটা ব্যবসা, এর যে একটা স্বাধীনতা আছে, সেটাই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা অন্যরকম তৃপ্তি কাজ করে এখানে। একদম। তো ঠিক এমন সময় হঠাৎ তার বাবা মায়ের কাছ থেকে ডাক আসে। পরিবারের একটা প্রতিষ্ঠিত মানে ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা রয়েছে। আচ্ছা। আর বাবা মা চাইছেন এই সন্তান যেন নিজের ওই নতুন স্টার্টআপ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে, এসে ওই পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরে। ও, এটা তো বিশাল একটা সংকট। ঠিক। এখন প্রশ্ন হলো, নিজের তিল তিল করে গড়া, রক্ত ঘামে ভেজা এত সফল একটা ব্যবসা ছেড়ে কেউ কি সত্যিই পরিবারের কাছে ওই পুরনো ব্যবসায় ফিরে যাবে, নাকি নিজের তৈরি করা পথেই হাঁটবে? এটা আসলেই অত্যন্ত জটিল একটা মনস্তাত্ত্বিক মানে পেশাগত টানাপোড়েন বলতে পারেন। একদিকে রক্তের টান, অন্যদিকে নিজের হাতে গড়া স্বপ্নের হাতছানি। আর এই টানাপোড়েনের পেছনের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর খুঁজতেই আমাদের আজকের এই আলোচনা। যারা শুনছেন তাদের জানিয়ে রাখি, আজকের এই পুরো আলোচনাটা অত্যন্ত সম্মানজনক এবং FT50 তালিকাভুক্ত একটা জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে প্রকাশিত একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। হ্যাঁ, আর এই পেপারের পেছনের গবেষকদের নামগুলো কিন্তু মেনশন করা দরকার। একদম। এই গবেষণার কারিগররা হলেন ইউনিভার্সিটি অফ বার্নের ফিলিপ সিগার, ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গের জ্যাসপার ব্রিঙ্কেরিং, জনকোপিং ইউনিভার্সিটির মাসিমো বাও আছেন। হ্যাঁ, আর আছেন সভেনস্কট নারিংস্লিভের জোহান কার্লসন এবং অ্যালফ্রেডো ডি ম্যাসিস, যিনি আবার ইউনিভার্সিটি অফ চিয়েটি পেসকারা, IMD ল্যাঙ্কাস্টার এবং ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত। সত্যি একটা গ্লোবাল টিম বলা যায়। তো মূল আলোচনায় মানে ওই পেপারের গভীরে ঢোকার আগে আমাদের যারা নিয়মিত শোনেন তাদের জন্য কয়েকটা ছোট কিন্তু জরুরি আপডেট আছে। হ্যাঁ, আমাদের ওই পডকাস্টের নতুন শিডিউলটা। ঠিক। পরিবেশের কথা ভেবে মানে AI ডেটা সেন্টারের বিপুল পানের ব্যবহার আর কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর লক্ষ্যে আমরা আমাদের রিলিজ শিডিউলে একটু পরিবর্তন এনেছি। আগামী মার্চ 2026 থেকে আমরা সপ্তাহে 2 দিন করে আসছি, প্রতি রবিবার আর সোমবার। একদম। রবিবার আমরা ক্লাসিক পেপার বা বইয়ের রিভিউ নিয়ে আসব, আর সোমবারের ফোকাস থাকবে একদম টপ টিয়ার পিয়ার রিভিউড জার্নালগুলোর উপর। এতে করে আমাদের আলোচনার গভীরতাও বজায় থাকছে, আবার প্রকৃতির উপর চাপটাও একটু কমানো যাচ্ছে। ঠিক তাই। আরেকটা দারুণ খবর আছে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর 86তম বার্ষিক সভায় সশরীরে অংশ নেওয়ার প্ল্যান করছেন, এটা তো বিশাল একটা ইভেন্ট। হ্যাঁ, তো তাদের জন্য শো নোটসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মোন্তাখাবিস নেতৃত্বে স্পেস ইকোনমির ওপর একটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ বা PDW এর রেজিস্ট্রেশন লিংক দেওয়া হলো। স্পেস ইকোনমি টপিকটা কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিং। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের এই পডকাস্টের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায় এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি আর হাইলি অন্টারপ্রেনিউরিয়াল ওয়ার্কশপে একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে থাকছেন। ওয়াও, এটা তো দারুণ ব্যাপার। শুধু তাই নয়, নতুন গবেষক আর PhD শিক্ষার্থীদের জন্য জুন 2026 থেকে শুরু হওয়া একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের সিম ডিভিশনের একটা নতুন উদ্যোগ AOM SIM-Bytes এর লিঙ্কও থাকছে শো নোটসে। ওই রিল স্টাইলের শর্ট ভিডিওগুলো, তাই তো? হ্যাঁ, একদম। প্রথম ইউটিউব শর্টটি করেছেন স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক প্রফেসর ফ্রিম্যান। বাহ। এই উদ্যোগটা মূলত অন্টারিওর ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমোলার ব্রেইনচাইল্ড, আর বর্তমানে শিকাগোর লয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন এর নেতৃত্বে এটা পরিচালিত হচ্ছে। আর আমাদের প্রযোজক গত 1 বছর ধরে এই সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির হয়ে এই ভিডিওগুলোর কন্টেন্ট ডিজাইন ও সম্পাদনার কাজে যুক্ত আছেন। সত্যি দারুণ সব উদ্যোগ। যারা একাডেমিক লাইনে নতুন, তাদের এগুলো খুব কাজে লাগবে। তো যারা গবেষণার জগতে একদম নতুন, তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এই অত্যন্ত যত্নশীল আর কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া গবেষণাপত্রটি একটু সময় নিয়ে পড়ার। লিঙ্কটা শো নোটসেই আছে। হ্যাঁ, পেপারটা পড়ার আগে আমরা একটু সহজ করে এর সারসংক্ষেপটা বলে দিতে পারি? একদম, সেটাই ভালো হবে। প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে সন্তান যদি একবার পারিবারিক ব্যবসার বাইরে গিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করে, তবে স্বাধীনতার স্বাদে সে হয়তো আর কখনোই পুরনো ব্যবসায় ফিরবে না। সাধারণত সবাই এটাই ভাবে। কিন্তু এই গবেষণা বলছে একদম উল্টো কথা।
নিজের ব্যবসা করার এই যে অভিজ্ঞতা, এটা আসলে ওই সন্তানকে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরার জন্য আরও অনেক বেশি যোগ্য করে তোলে। মানে তার দক্ষতা বাড়ে। ঠিক। তবে সে ফিরে আসবে কিনা সেটা নির্ভর করে তার নিজের স্টার্টআপ কতটা সফল আর পারিবারিক ব্যবসাটা কতটা আকর্ষণীয় তার উপর। এই জায়গাটাতেই পেপারটা পারিবারিক ব্যবসার উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের এতকালের ভাবনাকে একেবারে পাল্টে দিচ্ছে। এতকাল তো ভাবা হতো যে এই সাকসেশন বা উত্তরাধিকার বিধি একতরফা একটা সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, মানে বাবা মা বা বর্তমান মালিকরাই কেবল ঠিক করবেন যে কোন সন্তান ব্যবসার জন্য সবচেয়ে যোগ্য। ঠিক। কিন্তু এখানে গবেষকরা দেখাচ্ছেন যে এটা আসলে একটা দ্বৈত কর্তৃত্ব বা ডিউয়েল এজেন্সি প্রক্রিয়া। ডিউয়েল এজেন্সি মানে দুই পক্ষেরই সমান ভূমিকা আছে এখানে। একদম তাই। একদিকে যেমন বাবা মাকে ভাবতে হয় যে তাদের সন্তান এই বিশাল ব্যবসার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যোগ্য কিনা, মানে ব্যবসার দিক থেকে তার অ্যাট্রাকটিভনেস বা আকর্ষণীয়তা আছে কিনা। আচ্ছা। অন্যদিকে কিন্তু সন্তানকেও ভাবতে হয় যে সে নিজে এই পুরনো ব্যবসায় ফিরে আসতে ইচ্ছুক কিনা, যাকে পেপারে বলা হচ্ছে উইলিংনেস বা ইচ্ছা। দুটো পক্ষকেই রাজি থাকতে হবে। মানে বিষয়টা কি এমন যে ধরুন একজন রাজাকে শুধু তার যোগ্য উত্তরাধিকারী বা যুবরাজ নির্বাচন করলেই হয় না, ওই সিংহাসনে বসার জন্য যুবরাজের নিজেরও তো ইচ্ছা থাকতে হবে, তাই না? দারুণ উদাহরণ দিয়েছেন। ঠিক তাই। কিন্তু এই যুবরাজ যদি অন্য কোনো রাজ্যে গিয়ে নিজের একটা নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, তখন কি হবে? মানে নিজের সাম্রাজ্য গড়ার অভিজ্ঞতা তাকে পারিবারিক ব্যবসার জন্য আরও যোগ্য করে তোলে কিভাবে? এর উত্তরটা লুকিয়ে আছে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল হিউম্যান ক্যাপিটাল বা EHCর ধারণায়। মানে ধরুন অন্য কোনো কর্পোরেট অফিসে একটা 9 to 5 চাকরি করা আর শূন্য থেকে নিজের একটা ব্যবসা দাঁড় করানো, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল ফারাক আছে। তা তো বটেই। স্টার্টআপে তো সব নিজেকেই দেখতে হয়। ঠিক। নিজের ব্যবসা করতে গিয়ে ওই তরুণকে প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ বা নেতৃত্ব দেওয়া শিখতে হয়, চরম ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কর্মী নিয়োগ করতে হয়। হ্যাঁ, আর আর্থিক ব্যবস্থাপনার একদম খুঁটিনাটি বুঝতে হয়। এই যে রিয়েল লাইফ অভিজ্ঞতা, এটা তো কোনো সাধারণ বা ছকে বাঁধা চাকরিতে পাওয়া সম্ভব নয়। না, সেটা ঠিক। আর ঠিক এই কারণেই বাবা মায়ের চোখে এই সন্তানটি ব্যবসার হাল ধরার জন্য সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি হলো এই গবেষণার প্রথম হাইপোথেসিস বা তাত্ত্বিক ভিত্তি। দাঁড়ান, এখানে কিন্তু আমার একটা খটকা লাগছে। বলুন। যোগ্যতা তো সে অর্জন করলো, বুঝলাম। এই EHC বা জাদুকরী দক্ষতা তার হলো, কিন্তু এখন সে যদি তার নিজের স্টার্টআপ নিয়ে খুব ভালো একটা অবস্থানে থাকে, প্রচুর টাকা আয় করছে, নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চরম একটা স্বাধীনতা উপভোগ করছে, তাহলে সে কেন আবার ওই পুরনো পারিবারিক ব্যবসায় ফিরে আসবে? তার তো হারানোর অনেক কিছু আছে এখানে। ঠিক এই জায়গাটাতেই, মানে এই চমৎকার প্রশ্নটার উত্তর দিতেই অপরচুনিটি কস্ট বা সুযোগ ব্যয়ের হিসাবটা চলে আসে। সুযোগ ব্যয়ের? হ্যাঁ, গবেষণার দ্বিতীয় অংশে ঠিক এটাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন ওই সন্তানের নিজের উদ্যোগ অত্যন্ত সফল হয়, ধরুন তার রিটার্ন অন অ্যাসেট বা ROA এর মাত্রা খুব বেশি থাকে। আচ্ছা, যারা জানেন না তাদের জন্য বলে রাখি, ROA মানে হলো একটা ব্যবসা তার নিজস্ব সম্পদের তুলনায় কতটা দক্ষতার সাথে মুনাফা তৈরি করতে পারছে। একদম ঠিক। তো সন্তানের ব্যবসা যদি বিপুল মুনাফা তৈরি করে, তবে পারিবারিক ব্যবসায় ফিরে আসার অর্থ হলো তাকে ওই বিশাল সাফল্য আর নিজের তৈরি করার স্বাধীনতাটা ত্যাগ করে আসতে হবে। মানে তার অপরচুনিটি কস্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক তাই। তার এই ত্যাগের পরিমাণ এতই বেশি থাকে যে তার যোগ্যতা বা EHC থাকলেও ফিরে আসার ইচ্ছেটা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। আচ্ছা, তার মানে নিজের ব্যবসার সাফল্য এখানে ফিরে আসার পথে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু শুধু কি মুনাফাই একমাত্র ফ্যাক্টর? না, আরও ব্যাপার আছে। মানে কাজের পরিবেশ বা ইন্ডাস্ট্রির ধরন কতটা প্রভাব ফেলে? ধরুন সন্তান কাজ করছে সিলিকন ভ্যালির মতো অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং উদ্ভাবনী একটা টেক ইন্ডাস্ট্রিতে। হ্যাঁ, মানে খুব ডাইনামিক একটা জায়গা। ঠিক। আর ওইদিকে পারিবারিক ব্যবসাটা হলো একটা ধীর গতির পুরনো ধাঁচের ট্রেডিশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট। একটা যেন খরস্রোতা নদী আর অন্যটা একদম শান্ত হ্রদ। দারুণ অ্যানালজি। তো খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত কেউ কি ওই শান্ত হ্রদে ফিরতে চাইবে? এই প্রশ্নটাই গবেষণার হাইপোথিসিস 2B এবং 3Bতে খোঁজা হয়েছে। শিল্পের গতিশীলতা বা ইন্ডাস্ট্রি ডাইনামিজমের প্রভাবটা ঠিক এভাবেই কাজ করে। আচ্ছা। সন্তান যদি খুব দ্রুত গতির ইনোভেটিভ একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে,
তবে সে সাধারণত ওই ধীর গতির পারিবারিক ব্যবসাতে ফিরতে চায় না। তার মানে বোরিং লাগে আর কি। হ্যাঁ, মানে তার মনে হয় পারিবারিক ব্যবসায় ফিরে গেলে সে তার ওই সৃজনশীলতা আর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে পারবে না, আটকে যাবে। তাহলে তো এটা পারিবারিক ব্যবসার জন্য একটা বেশ বড় সমস্যা। ওই খরস্রোতা নদীতে চলে যাওয়া সন্তানকে শান্ত হ্রদে ফিরিয়ে আনার কি কোনো উপায় নেই তাহলে? উপায় আছে, আর সেটাই এই গবেষণার অন্যতম চমকপ্রদ একটা দিক। তাই নাকি? হ্যাঁ, ওই শান্ত হ্রদ বা পারিবারিক ব্যবসাটা যদি আর্থিকভাবে প্রচণ্ড সফল আর লাভজনক হয়, তবে পুরো দৃশ্যপটটাই পাল্টে যায়। মানে পারিবারিক ব্যবসার সাকসেস এখানে ম্যাটার করছে। একদম। পারিবারিক ব্যবসার এই অভাবনীয় সাফল্য সন্তানের সেই সুযোগ ব্যয় বা অপরচুনিটি কস্টকে এক ধাক্কায় অনেকখানি কমিয়ে দেয়। তার মানে শান্ত হ্রদ হলেও যদি সেখানে প্রচুর মাছ থাকে বা হ্রদটা যদি খুব মূল্যবান হয়, তবে সে ফিরে আসতেও পারে। ঠিক তাই। যখন সন্তান দেখে যে পারিবারিক ব্যবসাটা অত্যন্ত লাভজনক আর এর অর্থনৈতিক ভিত্তিটা অনেক মজবুত, তখন তার মাইন্ডসেটে একটা চেঞ্জ আসে। আচ্ছা। সে তখন অন্যভাবে ভাবে। হ্যাঁ, সে ভাবতে শুরু করে যে আমি যদি এই সফল ব্যবসাতে আমার স্টার্টআপের ওই নতুন আইডিয়া আর প্রযুক্তিগুলো কাজে লাগাই, তাহলে তো এটাকে আরও বহুগুণ বড় করা সম্ভব। ও, বুঝতে পেরেছি। মানে একটা বিশাল ক্যানভাস পেয়ে যাচ্ছে সে। একদম। এই শক্তিশালী পারফরমেন্স তখন সন্তানের কাছে একটা চুম্বকের মতো কাজ করে। এটা তাকে বোঝায় যে ফিরে আসা মানে কোনোভাবেই পিছিয়ে যাওয়া নয়, বরং একটা অনেক বড় প্ল্যাটফর্মে নিজের দক্ষতাকে আরও বড় পরিসরে প্রয়োগ করা। দারুণ। মানে এই তত্ত্বগুলো শুনতে তো অত্যন্ত যৌক্তিক মনে হচ্ছে, কিন্তু এই যে এত বড় একটা মনস্তাত্ত্বিক আর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা বলছি আমরা, এটা ডেটার মাধ্যমে প্রমাণ করা হলো কিভাবে? হ্যাঁ, মেথোডোলজিটা নিয়ে কথা বলা দরকার। বিশেষ করে যারা নতুন গবেষক শুনছেন, তাদের জন্য এই পদ্ধতির অংশটা জানা খুব জরুরি। এত বিশাল ডেটা বিশ্লেষণ হলো কিভাবে? গবেষকরা এখানে 2001 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত পুরো সুইডেনের পপুলেশন ডেটাবেস ব্যবহার করেছেন। ভাবুন একবার, সেখানে 8,274 জন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 8,000, বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, আর এখানে একটা বিশেষ পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার নাম কোর্সেন্ট এক্সাক্ট ম্যাচিং বা সংক্ষেপে CEM। এই CEM জিনিসটা আসলে কি, একটু সহজ করে যদি বলেন? এটাকে আপনি অ্যাপলস টু অ্যাপলস বা সমানে সমানে তুলনার সাথে চিন্তা করতে পারেন। আচ্ছা। মানে ধরুন যে সন্তান নিজের ব্যবসা করেছে, তার সাথে এমন একজন সন্তানেরই তুলনা করা হয়েছে যার বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষার স্তর, এমনকি পরিবারের সদস্য সংখ্যা একদম একই রকম, কিন্তু সে নিজের কোনো ব্যবসা করেনি। ও, যাতে অন্য কোনো কারণ বা বায়াস রেজাল্টকে প্রভাবিত করতে না পারে। একদম ঠিক। বয়স বা শিক্ষার কারণে যাতে কোনো পক্ষপাত না আসে, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপর তারা সার্ভাইভাল অ্যানালিসিস নামের একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সার্ভাইভাল অ্যানালিসিস, এটা কিভাবে কাজ করে? এটা হলো এমন একটা পদ্ধতি যেখানে সময়ের সাথে সাথে ডেটাকে ট্র্যাক করা হয়, এটা দেখার জন্য যে কখন একটা নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটছে। আচ্ছা, মানে টাইমিংটা দেখা হয়। হ্যাঁ, এই গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকরা বছরের পর বছর ধরে ওই তরুণদের ট্র্যাক করেছেন, শুধু এটা দেখার জন্য যে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এবং ঠিক কত বছর পর তারা নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় ফিরে আসার ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে। ডেটার এই নিখুঁত বিশ্লেষণ আসলে পুরো বিষয়টাকে একদম জলের মতো স্পষ্ট করে তোলে। মানে চমৎকার একটা কাজ। তো এই পুরো আলোচনা থেকে শিক্ষাবিদ আর পেশাজীবীদের জন্য মূল বার্তাটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? একাডেমিকদের জন্য মূল শিক্ষাটা হলো ওই উত্তরাধিকার বা সাকসেশনকে কেবল একতরফা হিসেবে দেখলে চলবে না। মানে শুধু বাবা মা ডাকলো আর সন্তান চলে এলো এমনটা নয়। একদম না, এটি একটা দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত। এখানে বাবা মায়ের চাহিদার পাশাপাশি সন্তানের নিজস্ব ক্যারিয়ার, তার অপরচুনিটি কস্ট এবং তার নিজের ব্যবসার অবস্থাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর যারা বাস্তবে পারিবারিক ব্যবসা চালাচ্ছেন, সেই বাবা মায়েদের জন্য বার্তাটা কি? তাদের জন্য বার্তাটা বেশ পরিষ্কার। সন্তান যদি বাইরে গিয়ে নিজের ব্যবসা করতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া মোটেও উচিত নয়। আচ্ছা। এটা কোনো বিদ্রোহ নয়, বরং এটা তার নেতৃত্ব শেখার আর বড় বড় ঝুঁকি নিতে শেখার সেরা উপায়।
তবে হ্যাঁ, সেই যোগ্য সন্তানকে পরে ফিরিয়ে আনতে হলে পরিবারকেও নিজেদের ব্যবসাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় করে রাখতে হবে। অর্থাৎ সন্তানকে উঠতে দিতে হবে আকাশ ছেনার জন্য, আর নিজের নীড়টাকে এতই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যেন সে তার সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার সেই নীড়েই ফিরে আসে। খুব সুন্দর করে বললেন বিষয়টা, একদম তাই। তবে এই পুরো আলোচনার সূত্র ধরে একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়, যেটা হয়তো এই পেপারে সরাসরি বলা হয়নি, কিন্তু একটু ভাবার বিষয়। কি রকম? ওই যে সন্তান যে বাইরের খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কেটে এসেছে, যে নিজের স্টার্টআপের ওই আধুনিক আর অত্যন্ত দ্রুতগতির একটা মানসিকতা নিয়ে পুরনো পারিবারিক ব্যবসায় ফিরে এলো, তখন ওই পুরনো কোম্পানিতে ঠিক কি ঘটে? মানে ধরুন পুরনো কোম্পানির সাধারণ যে কর্মকারীরা আছেন তাদের ওপর তার এই নতুন স্টাইলের কেমন প্রভাব পড়ে? এটা একটা দারুণ পয়েন্ট, তাই না? যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা তাদের যে একটা নিজস্ব কর্পোরেট কালচার, সেটা কিভাবে বদলে যায়? আর এই নতুন আর পুরাতনের সংঘর্ষে মানিয়ে নিতে গিয়ে কি পারিবারিক ব্যবসার আদি আদলটাই চিরতরে পাল্টে যায়? আসলে এই কালচারাল শিফটটা নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে। একদম। কে বলতে পারে, আগামী দিনের কোনো গবেষণায় হয়তো আমরা এই প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে যাব। আজকের মতো আলোচনা এখানেই রাখছি। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसके माता पिता एक बहुत बड़ा और दशकों पुराना पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं। हाँ, एक पूरी तरह से सेटल्ड एम्पायर। बिल्कुल, एक ऐसा स्थापित एम्पायर जहां हर प्रक्रिया तय है, मार्केट में उनका पूरा दबदबा है और संसाधनों की तो खैर कोई कमी ही नहीं है। और उस युवा के लिए भविष्य की एक आरामदायक कुर्सी बिल्कुल तैयार रखी है। एकदम सही कहा। लेकिन सोचकर देखिए कि वो युवा उस जमे जमाए बिजनेस को, उस बेहद सुरक्षित भविष्य को पूरी तरह से छोड़कर अपना खुद का एक छोटा सा अनिश्चितताओं से भरा टेक स्टार्टअप शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही जोखिम भरा कदम है। बहुत ज्यादा। बाहर से देखने पर समाज को, रिश्तेदारों को और शायद इंडस्ट्री को भी यही लगता है कि उसने अपने परिवार की विरासत को ठुकरा दिया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसने सीधे तौर पर एक बगावत कर दी है। हाँ, लोग तो यही कहेंगे कि भटका हुआ युवा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कथित बगावत ही असल में उस युवा को भविष्य में अपने उसी पारिवारिक साम्राज्य का सबसे बेहतरीन, सबसे धारदार लीडर बनने की ट्रेनिंग दे रही हो। ये एक बहुत ही गहरा और हमारी जो पारंपरिक सोच है उसे पूरी तरह से चुनौती देने वाला नजरिया है। मतलब हम अक्सर उत्तराधिकार या जिसे सक्सेशन कहते हैं उसे एक बहुत ही सीधी रेखा की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज से डिग्री ले ली। बिल्कुल, डिग्री ली, फिर पारिवारिक बिजनेस में एक जूनियर स्तर के पद से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे साल दर साल शीर्ष तक का सफर तय किया। लेकिन असल दुनिया में परिवार के सुरक्षित साये से दूर जाकर खुद को साबित करने की ये जो प्रक्रिया है वो सिर्फ एक युवा का भटकाव नहीं है। सही बात है। ये कौशल निर्माण का एक लीडर बनने का बहुत ही जटिल और असरदार तरीका हो सकता है। आभास पर आधारित है। मतलब हम आज जिस शानदार शोध पत्र पर बात कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, बहुत ही सम्मानित। हाँ, इस पेपर का शीर्षक है फ्लाई सोलो देन रिटर्न होम, Offspring's Entrepreneurship Experience and their Future as Family Business Successors। और इस रिसर्च के पीछे अकादमिक दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों का एक अद्भुत वैश्विक संगम है। बिल्कुल, मतलब इसमें फिलिप सीगर, जैस्पर ब्रिंकरिंग, मासिमो बाओ, जोहान कार्लसन और अल्फ्रेडो डी मैसिस जैसे विद्वान शामिल हैं। और अगर हम इनके संस्थानों की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, जोंगपिंग यूनिवर्सिटी, Svenskit Näringsliv और यूनिवर्सिटी डेगली स्टूडी जी दी अनुन्सियो, हाँ, और IMD, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी और जेजियांग यूनिवर्सिटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से जुड़े हैं। ये वाकई शोधकर्ताओं की एक बेहद मजबूत टीम है। एकदम। और इस विषय की गहराई में उतरने से पहले अकादमिक शोध और हमारी इस चर्चा को पसंद करने वाले वफादार श्रोताओं के लिए कुछ बहुत ही रोमांचक और जरूरी अपडेट साझा करना भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे शो के शेड्यूल को लेकर ही है। तो मार्च 2026 से ये शो अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गया है।
अब हर रविवार और सोमवार को नई चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। और इसका फॉर्मेट भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, रविवार को हम किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या किसी बेहतरीन किताब पर बात करते हैं, जबकि सोमवार का पूरा फोकस टॉप टियर पीयर रिव्यू जर्नल्स के ताज़ा पब्लिकेशंस पर रखा जाता है। इस नई पहल को जो समर्थन मिल रहा है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और पता है, ये साप्ताहिक रिलीज का मॉडल अपनाने के पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक और पर्यावरण से जुड़ा कारण है। बिल्कुल, ये बताना बहुत जरूरी है। आज के समय में एआई आधारित प्रणालियां प्रकृति पर भारी प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल। बैकएंड डेटा सेंटर्स में इन जटिल प्रक्रियाओं को चलाने के लिए पानी की अत्यधिक खपत होती है। तो ऐसे में अपने रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन की दिशा में योगदान देने का एक छोटा सा प्रयास है। और ये सब चर्चाओं की गुणवत्ता और उनकी गहराई से कोई समझौता किए बिना किया जा रहा है। ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसके साथ ही एकेडमिक कम्युनिटी के लिए दो बहुत ही खास सूचनाएं हैं। हाँ, जो लोग कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल। यदि कोई शिक्षावेद या शोधकर्ता अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट यानी AOM की 86th एनुअल मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की योजना बना रहा है, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। स्पेस इकोनॉमी वाला वर्कशॉप राइट आयोजित हो रहा है। इस बहुविषयक और अत्यधिक उद्यमशील वर्कशॉप का नेतृत्व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मोंतखाबी कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस शो के प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय भी इस वर्कशॉप में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हैं। वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। जो लोग स्पेस इकोनॉमी के इस उभरते क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अंदरूनी दृष्टिकोण और नेटवर्क बनाने का शानदार अवसर है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक शो नोट्स में दिया गया है। और एक और सूचना है, जो शुरुआती करियर वाले स्कॉलर्स या PhD छात्र सुन रहे हैं, उनके लिए एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के सिम डिवीजन ने एक नई मासिक पहल शुरू की है जिसे AOM SIM-Bytes कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये जून 2026 से शुरू हुआ है ना? तैयार किया गया है। और पता है, पहला YouTube शॉर्ट तो खुद प्रोफेसर एड फ्रीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वाह, जिन्हें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का जनक माना जाता है। ये तो वाकई में नए शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना है। बिल्कुल। और इस पहल का नेतृत्व सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी कर रही है। ये मूल रूप से प्रोफेसर शेल्डन सिमोला के दिमाग की उपज है, जो ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटेरियो से हैं। और अब इसे कमेटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन द्वारा शानदार तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से हैं। और यहाँ भी हमारे प्रोड्यूसर जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, पिछले 1 साल से इस पहल के कंटेंट डिजाइन और एडिट की योजना बनाने में वॉलंटियर कर रहे हैं, मतलब ताकि रिसर्च कम्युनिटी तक सबसे बेहतरीन सामग्री पहुंच सके। इसका लिंक भी शो नोट्स में उपलब्ध है। बहुत खूब। तो इन सब रोमांचक सूचनाओं के बाद एक बार फिर ये दृढ़ आग्रह है कि समय निकालकर इस बेहद सोच समझकर तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए लेख को जरूर पढ़ें। तो चलिए, जो लोग अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च यात्रा बस शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए इस पेपर का मूल आधार समझना जरूरी है। बिल्कुल, इसे सरल भाषा में समझाना बेहतर रहेगा। यह शोध एक बहुत ही बुनियादी सवाल की जांच करता है। अगर परिवार का कोई युवा सदस्य अपने करियर की शुरुआत में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है, तो क्या इससे भविष्य में पारिवारिक व्यवसाय को संभालने की उसकी संभावना बढ़ती है या घटती है? चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह पेपर इस पूरी प्रक्रिया को एक डुअल एजेंसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो ये डुअल एजेंसी का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। मतलब डुअल एजेंसी को आप कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे समझें कि उत्तराधिकार कोई एक तरफा फैसला नहीं है। सिर्फ माता पिता या पारिवारिक व्यवसाय के वर्तमान लीडर ये तय नहीं कर रहे हैं कि अगला वारिस कौन होगा, बल्कि वारिस भी स्वतंत्र रूप से ये तय कर रहा है कि उसे अपने लिए कौन सा करियर चुनना है और उसे वो पारिवारिक ताज पहनना भी है या नहीं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी एजेंसी है, अपनी अपनी निर्णय लेने की क्षमता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले माता पिता या मौजूदा पीढ़ी के नजरिए से दिखते हैं। सवाल ये उठता है कि माता पिता ऐसे बच्चे को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहेंगे जो शुरुआत से ही परिवार के बिजनेस से दूर भाग गया हो? जाहिर है, उन्होंने तो उसे अपना बिजनेस सिखाने की योजना बनाई होगी। हाँ, यहीं पर एंटरप्रेन्योरियल ह्यूमन कैपिटल या जिसे हम संक्षेप में
EHC कह सकते हैं, उसका सिद्धांत सामने आता है। ये EHC वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। जब कोई युवा अपना खुद का व्यवसाय चलाता है तो वो किसी और की छत्र छाया या सुरक्षा में काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। वो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। वो शून्य से टीम बनाना सीखता है, वो बाजार से संसाधन जुटाता है, जोखिम का असली मतलब समझता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी सफलताओं और विफलताओं की पूरी जिम्मेदारी उठाना सीखता है। ये अनुभव पारंपरिक प्रशिक्षण से कई अधिक असरदार होता है। मतलब किसी नामी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेने या परिवार के ही बिजनेस में इंटर्नशिप करने से तो ये बहुत अलग है। एकदम अलग है। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना, जैसे मान लीजिए एक राजकुमार है, उसे आप सीधे महल की गद्दी पर बैठाने या सुरक्षित सुख सुविधाओं में रखने के बजाय उसे जंगल में जीवन बिताने के लिए भेज देते हैं। शानदार उपमा है। महल में रहकर वो सिर्फ किताबें पढ़ सकता था या राजा को काम करते हुए दूर से देख सकता था, लेकिन जंगल में उसे खुद संघर्ष करना होगा, मौसम की मार झेलनी होगी, संकटों का सामना करना होगा। और जब वो उस जंगल से वापस लौटेगा तो संकटों से लड़ने का उसका अपना जो अनुभव होगा वो उसे एक ऐसा परिपक्व राजा बनाएगा जो वो महल में रहकर कभी नहीं बन सकता था। माता पिता भी शायद इसी EHC को देखते हैं और मानते हैं कि ये युवा अब संकट के समय उनका साम्राज्य संभालने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। ये एक बहुत ही सटीक और विचारणीय उपमा है। एक माता पिता के रूप में आप ऐसा लीडर चाहेंगे जो पहले से ही आग में तपकर कुंदन बन चुका हो। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर ड्यूल एजेंसी का दूसरा पहलू सामने आता है, यानी उस युवा का नजरिया। हाँ, जंगल का वो अनुभव उस राजकुमार को माता पिता की नजरों में सबसे आकर्षक उम्मीदवार बना देता है। लेकिन क्या वो खुद वापस लौटना चाहेगा? उस युवा ने बाहर की दुनिया में अपने लिए जो कौशल विकसित किए हैं वो सिर्फ पारिवारिक फॉर्म के लिए ही नहीं बल्कि बाहर की पूरी दुनिया के लिए मूल्यवान है। और यहीं से उस युवा के खुद के निर्णय और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर की लागत की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। मतलब अगर वो बच्चा बाहर जाके इतना सक्षम बन गया है तो उसकी अपनी भी तो कुछ शर्तें होंगी। एकदम सही। अब मान लीजिए उस युवा का खुद का स्टार्टअप बहुत सफल हो जाता है। रिसर्च में इसे रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA के जरिए मापा गया है। अच्छा, तो ROA यहाँ एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। हाँ, अगर आसान भाषा में कहें तो अगर उस युवा के स्टार्टअप का मुनाफा और उसकी ग्रोथ अपने इंडस्ट्री के बाकी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत अच्छी है तो पारिवारिक व्यवसाय में वापस लौटने की उसकी लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अधिक हो जाती है। पर सोचिए, अगर वो बच्चा बाहर इतना ही सफल है तो क्या वो वापस जाकर अपनी ही परिवार के बिजनेस को खरीद नहीं लेगा? मतलब बाय आउट या अपने स्टार्टअप के साथ मर्ज नहीं कर लेगा? ये भी एक संभावना है। या फिर क्या ये महज अहंकार का मामला है जहां उसे अपनी एक अलग पहचान बनाए रखनी है और वो किसी भी कीमत पर अपने माता पिता के साए से बाहर ही रहना चाहता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये केवल अहंकार या आर्थिक गणित तक सीमित नहीं है। तो और क्या कारण हो सकता है? ये स्वायत्तता और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का एक बहुत गहरा मामला है। जब कोई युवा शून्य से एक शानदार स्टार्टअप खड़ा करता है तो उसे एक निर्माता या क्रिएटर होने का एहसास होता है। हाँ, वो अपनी खुद की एक विरासत बना रहा है। बिल्कुल। वो उस गति और आजादी का आदी हो जाता है। अब जरा एक उदाहरण से सोचिए। एक युवा ने एक बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सप्लाई चेन स्टार्टअप बनाया है जो बहुत तेज और आधुनिक है। ठीक है। दूसरी तरफ उसका पारिवारिक बिजनेस दशकों पुराना अपारंपरिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है और नियम पहले से बने हुए हैं। ऐसे में तो उस स्थापित बिजनेस में लौटना उसे एक समझौते या एक बलिदान जैसा ही लगेगा। एकदम सही। उसे लग सकता है कि वो अपनी आजादी और इनोवेशन की गति खो देगा। स्वीडन के 8274 उत्तराधिकारियों के विशाल डेटा से यही पता चलता है। वाह, 8274! ये तो बहुत बड़ा डेटाबेस है। हाँ, और ये डेटा साफ बताता है कि युवा का अपना व्यवसाय जितना बेहतर प्रदर्शन करता है उसके वापस लौटने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मतलब उसका खुद का बिजनेस अगर हिट है तो वो वापस नहीं जाएगा। सटीक आंकड़ों में कहें तो ROA में प्रति प्रतिशत पॉइंट की वृद्धि के साथ लौटने की संभावना में लगभग 25.6% की भारी गिरावट आती है। 25.6%। यहाँ आकर ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक सफल और डायनामिक स्टार्टअप उस युवा को परिवार से दूर खींच रहा है तो वो कौन सी चीज है जो चुंबक की तरह उसे वापस खींच सकती है? मतलब हर कोई तो बाहर नहीं लुक जाता ना, कुछ तो वापस लौटते ही हैं। हाँ, कुछ तो वापस आते हैं। तो वो क्या है जो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मात दे सकता है? यहीं पर पारिवारिक व्यवसाय का अपना प्रदर्शन एक गेम चेंजर साबित होता है। अच्छा।
यदि युवा बाहर एक डायनामिक दुनिया में है तो वो वापस तभी लौटेगा जब पारिवारिक व्यवसाय का अपना प्रदर्शन बहुत ही शानदार और प्रगतिशील हो। तो क्या ये एक तरह का पारिवारिक मुकाबला है? आप ऐसा कह सकती हैं। मतलब क्या माता पिता को अब ये साबित करना होगा कि उनका बिजनेस भी उतना ही रोमांचक, लाभदायक और प्रगतिशील है जितना कि उस युवा का अपना नया स्टार्टअप? एक तरह से हाँ, डेटा बिल्कुल यही साबित करता है। एक बेहद सफल पारिवारिक बिजनेस यहाँ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम करने वाले टूल के रूप में काम करता है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। जब पारिवारिक फर्म असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तो वो युवा को यह संकेत देती है कि वो अपने उद्यमशील कौशल, अपनी ऊर्जा और अपने नए विचारों को यहाँ भी लागू कर सकता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि घर लौटने का मतलब किसी भी तरह से अपने करियर, अपनी महत्वाकांक्षाओं या अपने आर्थिक विकास से समझौता करना नहीं है। हाँ, बल्कि यह उसे एक कहीं अधिक बड़े और स्थापित मंच पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका देता है। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सब सैद्धांतिक रूप से सुनने में बहुत तार्किक और शानदार लगता है, लेकिन जो लोग रिसर्च में नए हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि लेखकों ने इसे असल जिंदगी के डेटा से कैसे साबित किया। हाँ, मेथोडोलॉजी को समझना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि डेटा तो बहुत तरह के होते हैं और उनमें शोर भी बहुत होता है। शोधकर्ताओं ने 2001 से 2019 के बीच स्वीडन की पूरी आबादी का डेटा इस्तेमाल किया। पर मैं सोच रही थी, स्वीडन ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्वीडन का चुनाव इस शोध के लिए बहुत ही रणनीतिक और शानदार था। स्वीडन एक बहुत ही समतावादी या जिसे हम इगैलिटेरियन समाज कहते हैं वैसा समाज है। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में पारिवारिक दबाव और पदानुक्रम बहुत हावी होते हैं। हाँ, विशेष रूप से एशियाई देशों में ऐसा बहुत होता है। बिल्कुल, बच्चों को कई बार मजबूरी में पारिवारिक बिजनेस में जाना पड़ता है, लेकिन स्वीडन में सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्य ऐसे हैं कि वहां बच्चों को अपना करियर चुनने की पूरी और सच्ची आजादी होती है। मतलब वहाँ के डेटा में जो फैसला दिखेगा वो किसी दबाव का नहीं बल्कि स्वतंत्र चुनाव का होगा। बिल्कुल, इसलिए डुअल एजेंसी को मापने के लिए जहां माता पिता की इच्छा और बच्चे की इच्छा दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, यह स्वीडन का डेटाबेस सबसे आदर्श था। समझ गए। और मेथोडोलॉजी में शोधकर्ताओं ने कॉर्सेंट एग्जैक्ट मैचिंग या जिसे हम CEM कहते हैं उसका इस्तेमाल किया। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो रिसर्च में नया है, ये मैचिंग टेक्निक क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि शोधकर्ता सेब की तुलना सेब से कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे एक ही उम्र, एक ही लिंग, जन्म क्रम और समान शिक्षा वाले दो युवाओं की तुलना करना जिनमें से सिर्फ एक ने अपना स्टार्टअप शुरू किया हो और दूसरे ने नहीं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और आपका आकलन बिल्कुल सही है। CEM का मुख्य काम ही डेटा में मौजूद पक्षपात या बायस को हटाना है। अच्छा, अगर हम ऐसे दो युवाओं की तुलना करें जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और परिवार के व्यवसाय का आकार बिल्कुल अलग-अलग है, तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके फैसलों के पीछे उनका स्टार्टअप का अनुभव मुख्य कारण था या कोई और बाहरी चीज। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए शोधकर्ताओं ने हर उस युवा की जिसके पास स्टार्टअप का अनुभव था एक ऐसे जुड़वा से तुलना की जिसके पास सब कुछ बिल्कुल समान था सिवाय उस स्टार्टअप वाले अनुभव के, और उन्होंने सर्वाइवल एनालिसिस का भी प्रयोग किया। और इस पूरी तरह से साफ किए गए डेटा से नतीजा क्या निकला? वो नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा नतीजा था। जिन बच्चों के पास अपना स्टार्टअप चलाने का अनुभव था, उनके पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी बनने की संभावना उन बच्चों की तुलना में 83% अधिक थी जिनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। 83%। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि बाहरी उद्यमशीलता परिवार से दूर जाने का रास्ता नहीं बल्कि घर लौटने का एक बहुत ही मजबूत पुल है, बशर्ते परिस्थितियां और अवसर दोनों तरफ सही हों। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं वे शिक्षाविदों और व्यवसायियों दोनों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। शिक्षाविदों के लिए ये शोध एक बिल्कुल नई दिशा खोलता है। ये स्पष्ट करता है कि पारिवारिक व्यवसाय में उत्तराधिकार कोई एक तरफा फैसला नहीं है। ये पूरी तरह से एक डुअल एजेंसी प्रक्रिया है। सही बात है। इसमें बच्चों की इच्छाएं, उनके विकल्प और उनके सामने मौजूद अवसर भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं जितनी कि माता पिता की योजनाएं। और व्यवसायियों या पारिवारिक फर्म चलाने वाले माता पिता के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, उन्हें क्या सीख मिलती है इससे? खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे व्यक्तिगत अस्वीकृति या परिवार की विरासत को नकारने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। असल में वो युवा खुद को एक बेहतरीन लीडर के रूप में तैयार कर रहा है। ऐसे में दोनों पीढ़ियों के बीच करियर के अवसरों, जोखिमों और लागतों पर बहुत ही खुला और ईमानदार संवाद होना चाहिए। मतलब वो राजकुमार जंगल में जीवन जीना सीख रहा है ताकि कल को महल की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से उठा सके। इस पूरी चर्चा ने उत्तराधिकार को देखने के हमारे नजरिए को गहराई से बदल दिया है। यकीनन। लेकिन जाते जाते इस विषय पर एक नए और दिलचस्प विचार पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, जिस पर शायद और चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, वो क्या है? अगर एक नया स्टार्टअप चलाना पारिवारिक बिजनेस को संभालने की सबसे अच्छी और व्यावहारिक ट्रेनिंग है, तो क्या पारिवारिक व्यवसायों को अपने बच्चों के बाहरी स्टार्टअप्स को जानबूझ के फंड करना चाहिए? ये सोचने वाली बात है और ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या इस शुरुआती निवेश को एक लीडरशिप डेवलपमेंट बजट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए? वाह। जैसे बड़ी कंपनियां अपने अधिकारियों को महंगी ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड भेजती हैं, वैसे ही परिवार अपने बच्चे के जोखिम भरे स्टार्टअप को उसकी वास्तविक व्यावहारिक ट्रेनिंग मानकर फंड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इससे बाहरी स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्वतंत्रता पर कोई असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या वो युवा सच में उस संघर्ष और उस अवसर की लागत को गहराई से महसूस कर पाएगा जो इस शोध का मूल आधार है? क्या सुरक्षा के एक मजबूत जाल के साथ किया गया संघर्ष असल संघर्ष के बराबर होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जंगल की असली परिभाषा को चुनौती देता है जहां राजकुमार को भेजा गया था। शायद हर परिवार को अपनी विरासत बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी को उस विरासत से कुछ समय के लिए आज़ाद करना सीखना होगा। यह एक ऐसा विचार है जो व्यवसाय और रिश्तों दोनों की पेचीदगियों को छूता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस सुकून भली और गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विचार करते रहिए। Forestil dig lige, at du står ved begyndelsen af din karriere, og du bærer på en helt særlig arv. Altså, du er barn af en virkelig succesfuld ejer af en stor familievirksomhed. Ja, det er jo et massivt og næsten livsdefinerende valg, man står overfor der. Lige præcis. Altså, du kan vælge at blive i de her trygge, forudsigelige rammer og lære maskinrummet at kende indenfra, og så langsomt forberede dig på at overtage hjørnekontoret en dag. Eller man kan vælge den helt anden vej. Ja, nemlig. At sprede vingerne, forlade reden og simpelthen tage en enorm personlig risiko ved at starte sin helt egen virksomhed op fra bunden. Og den konventionelle visdom i erhvervslivet har jo længe dikteret, at hvis du først vælger den vej, altså tager ud og starter dit eget, så vender du aldrig tilbage. Nej, for så har man ligesom valgt sig ud af affølgen, tænker de fleste. Præcis. Men ny forskning peger på noget dybt fascinerende. Hvad nu hvis netop den der hårde iværksætterrejse at flyve solo og overleve i stormvejret i virkeligheden er den ultimative og helt hemmelige forberedelse til at vende hjem og overtage familiens imperium? Og det er præcis det spændingsfelt, vi skal undersøge i dag. For det er ikke længere bare en linje af fortælling om pænt at blive folden vel. Det er en langt mere kompleks udveksling af erfaringer. Nej, slet ikke. Og for at forstå mekanismerne bag alt det her, tager vi udgangspunkt i en utrolig grundig artikel for det prestigefyldte Journal of Management Studies. Det er jo, som mange ved, et FT50 listet tidsskrift af den absolut højeste kaliber. Helt bestemt. Og titlen på deres forskning er virkelig rammende. Fly solo, then return home. Offsprings Entrepreneurship Experience and their Future as Family Business Successors. Det er jo et rigtig stærkt internationalt hold bag os, ikke? Jo, absolut. Vi har Philipp Sieger fra University of Bern, Jasper Brinkerink fra University of Edinburgh, Massimo Baù og Johan Karlsson fra Jönköping University, og så Alfredo De Massis, som er tilknyttet IMD, Lancaster og Chi-Wing University. Virkelig et stjernehold. Men inden vi kaster os helt ind i deres data og metoder, har vi lige et par vigtige meddelelser til dig, der lytter med. Fra og med marts 2026 er vi nemlig overgået til at være et ugenligt format. Ja, med faste udgivelser hver evig eneste søndag og mandag.
Lige præcis. Søndag byder på klassiske akademiske artikler eller boganmeldelser, mens vi om mandagen udelukkende har fokus på at gennemgå de allernyeste publikationer fra top-tier peer-reviewede tidsskrifter. Præcis som i dag. Vi vil bare gerne sige tusind tak for din loyale støtte. Det betyder alt for os. Og der er faktisk en ret vigtig klimamæssig årsag til lige netop den her planlægning. Vores format assisteres jo af avanceret AI-teknologi, og det kræver desværre betydelige træk på naturens ressourcer, særligt et enormt vandforbrug i de store bagvedliggende datacentre. Det er vildt at tænke på. Ja, altså, det at begrænse vores udgivelser i løbet af ugen er vores måde at give lidt tilbage til klimakampen på, uden at vi mister rigdommen og dybden i vores samtaler med dig. Helt sikkert. Og en anden spændende ting. Planlægger du at deltage personligt ved Academy of Management, altså AOM's 76. årlige møde i Philadelphia i USA, så husk lige at registrere dig til deres Professional Development Workshop, eller PDV, om Space Economy. Ja, det er et fantastisk spændende tværfagligt felt. Den workshop ledes af Dr. Meldi Montakapi fra Said Business School ved Oxford University. Nemlig. Og vores egen producer, Mayukh Mukhopadhyay, er faktisk også bidragyder til den her yderst entreprenørende PDW om Space Economy. Du kan finde et direkte link i vores show notes. Og vi har faktisk en nyhed mere til det akademiske samfund. AOM's SIM Division har i stilhed lanceret et nyt månedligt initiativ kaldet AOM SIM-Bytes med start nu her i juni 2026. Hvad går det initiativ ud på helt præcist? Det er korte, real-stylede videoer lavet af seniorforskere, og de er specielt målrettede forskere tidligt i karrieren og Ph.D.-studerende. Den allerførste YouTube-short er faktisk med professor Ed Freeman, der jo er kendt som faderen til stakeholder-kapitalisme. Ej, hvor fedt, at de har fået ham med. Ja, det er kæmpestort. Initiativet drives af SIM Curriculum Development Committee. Vores producent har som frivillig medlem af komiteen arbejdet indgående det seneste år sammen med komiteens leder om planlægningen af indholdsdesignet og klipningen af de her videoer. Det er virkelig et stærkt styret frivilligt arbejde. Og det var professor Shelding Simola fra Trent University, der udtænkte konceptet, ikke sandt? Jo, præcis. Og det føres nu videre med stor succes af komiteens formand, professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Du finder også et link til AOM SIM-Bytes i show notes. Fantastisk. Vi opfordrer dig virkelig varmt til at tage dig tid til at læse den her utroligt veludarbejdede og peer-reviewede artikel. Linket ligger som sagt klar til dig. Men lad os lige skære kernen ud for dig, der måske lige er startet på din egen forskningsrejse. Ja, hvis vi skal forklare det helt simpelt, så undersøger forskningen et klassisk familiedilemma. Forældrene vil gerne have, at deres datter eller søn overtager virksomheden, men kun hvis de er dygtige nok. Så spørgsmålet er simpelthen, gør det et barn mere eller mindre tilbøjeligt til at overtage familievirksomheden, hvis de først går ud og bygger deres egen startup? Præcis. Og svaret er ikke bare et letkøbt ja eller nej. Det afhænger af en utrolig fin balancegang. På den ene side opbygger barnet nogle helt unikke ledelsesevner i deres egen virksomhed, som forældrene beundrer og har desperat brug for. Men på den anden side? På den anden side afhænger det af, hvor succesfuld den der startup bliver. Hvis barnets egen virksomhed bliver en ultisk massiv økonomisk succes, kan de simpelthen ende med at blive for dyre eller bare uvillige til at vende hjem. Ja, og det bringer os jo direkte ind i det teoretiske fundament. Forskerne opstiller det, de kalder et dual agency-problem. Dobbeltdarkens. Hvad betyder det for selve overdragelsen? Det betyder fundamentalt set, at et succesfuldt generationsskift kræver, at to ting sker på én gang. For det første skal forældrene kigge på arvingen og synes, at de er attraktive som leder. For det andet skal arvingen kigge på familievirksomheden og være villig til at overtage. Begge parter har fri vilje. Men vent lidt. Er forældre i en familievirksomhed ikke nærmest altid desperate for, at deres børn overtager? Jeg mener, nepotisme er jo et stærkt overlevelsesinstinkt i de krise, ikke? Det er en populær antagelse, men forskning viser noget andet. Især når vi taler store, moderne virksomheder. Forældrene har jo medarbejdere og et livsværk at beskytte. At overlade rorpinden til et barn, der aldrig har bevist sit værd, det er simpelthen for farligt. Og det er her begrebet IEC, Entrepreneurial Human Capital, eller iværksætterkapital, kommer ind i billedet. Lige præcis. Det handler om menneskelig kapital. Når et barn starter noget selv, lærer de lektier, ingen business school nogensinde kan undervise i. De lærer at lede i kaos, tage økonomiske risici, hyre folk og træffe tunge strategiske beslutninger.
Det lyder jo nærmest som at sende sit barn på den ultimative ledelses bootcamp. Det er fuldstændig, hvad det er. De bliver hæret, og det gør dem ekstremt attraktive i forældrenes øjne, især hvis man sammenligner dem med søskende, der bare har haft trygge, almindelige lønmodtagerjobs. Men er der ikke en gigantisk indbygget risiko her, hvis de bliver for gode til at flyve solo? Hvorfor i al verden skulle de så nogensinde vende tilbage til familiens rede? Det må da skabe en enorm alternativ omkostning, en opportunity cost for dem. Jo, og du rammer plet der. Det er selve friktionen i artiklen. Det, der gør dem allermest attraktive for forældrene, er præcis det samme, der mentalt og økonomisk binder dem til deres eget uafhængige projekt. Det er virkelig et spændende spændingsfelt. Men hvordan undersøger man overhovedet noget så følelsesladet og komplekst på en objektiv, videnskabelig måde? Forfatterne har jo valgt et helt særligt laboratorium til deres dataindsamling, nemlig Sverige. Ja, Sverige er fantastisk til præcis den her slags metode. Først og fremmest har de et enormt datasæt fra de nationale registre, som gør det muligt at koble familiemedlemmer direkte til virksomhedsdata. De har kigget på over 8.000 potentielle arvinger over en periode fra 2001 til 2019. Men hvorfor er netop Sverige så perfekt til det her? Er det bare på grund af registerdata, eller stikker det dybere? Det stikker meget dybere. Udover den fantastiske data, har Sverige en meget egalitær og en ligestillet kultur. Arvefølgen går altså ikke bare per automatik til den ældste søn. Beslutningerne træffes ud fra kompetencer og vilje. Så der er ingen social tvang involveret på samme måde som i visse andre lande? Nej, netop. Og det passer helt perfekt til at teste vores dual agency-teori. Det er frivillige valg fra begge sider. Okay, men lad mig alligevel lige lege djævelens advokat et kort øjeblik. Når man kigger på tusindvis af arvinger og konkluderer noget om iværksættererfaring, hvordan ved vi så, at det overhovedet er erfaringen, der gør forskellen? De her børn kunne vel bare være mere risikovillige eller ambitiøse af natur? Det er en klassisk statistisk faldgruppe, men forfatterne har brugt en genial og meget kompleks metode til at omgå det. Den kaldes CEM, Coordinate Exact Matching. Okay, og hvis vi skal forklare det uden for meget jargon. Iværksættererfaring, som var fuldstændig ens på alle andre parametre. Wow. Okay, så alder, køn, uddannelse, alt det passede sammen. Ja, alt. Selv antallet af søskende var identisk. Så de lavede reelt set statistiske tvillinger eller kloner for at isolere præcis det ene træk, om de havde startet deres eget projekt, og brugte derefter overlevelsesanalyse for at se, hvornår og om de overtog familiens firma. Præcis. Det giver et knivskarpt resultat uden alt støjen for andre faktorer. Okay, med den utrolig stærke metode på plads, så lad os dykke ned i resultaterne. Hvad fandt de frem til som det helt store billede i deres første hypotese? Resultaterne faktisk vilde. De modbeviser fuldstændig myten om, at iværksætteri er et permanent farvel til familien. At have sin egen iværksættererfaring gør et barn hele 83% mere tilbøjelig til at blive efterfølger i familievirksomheden. Men 83%, det er jo enormt højt. Forældrene tager dem altså tilbage med kyshånd. Ja, fordi den opbyggede ERC, altså iværksætterkapitalen, er uvurderlig. Men alt har en grænse, og det er her fælden ved for stor succes dukker op i deres hypotese 2a. Det twist, du nævnte tidligere. Lige præcis. Forskerne fandt nemlig, at jo bedre arvingens egen virksomhed klarede sig økonomisk, og her målte de på ROA, altså afkastet, i forhold til branchens gennemsnit, jo lavere var sandsynligheden for, at de vendte hjem. Så hvor meget falder lysten egentlig til at vende hjem? For hver eneste procentpoint arvingens virksomhed overgik branchen, faldt sandsynligheden for overtagelse af familiefirmaet med ca. 72,6%. Hold da op, tænk lige over det. Dit eget projekt er blevet så massiv en succes, at det økonomiske og følelsesmæssige tab ved at forlade det for at lede dine forældres virksomhed simpelthen bliver alt for højt. De gydende håndjern smækker i. Nemlig. Forældrene kan simpelthen ikke konkurrere med den finansielle tryghed, barnet selv har skabt. Men det bliver faktisk endnu mere nuanceret. Hvordan det? I hypotese 3b kigger de på kompleksiteten af brancher. Hvad nu, hvis arvingen startede en virksomhed i en lynhurtig, innovativ og dynamisk branche som tech, mens familievirksomheden er mere traditionel, for eksempel en maskinfabrik? Altså umiddelbart vil jeg jo tænke, at den dynamiske tech-data aldrig i livet har lyst til at vende hjem til en støvet maskinfabrik. Det vil de fleste nok tænke, men artiklen viser, at det fuldstændig afhænger af familievirksomhedens egen præstation. Okay, så hvis maskinfabrikken kører dårligt, så bliver hun væk. Præcis.
Men, og det er det interessante, hvis familievirksomheden præsterer usædvanligt stærkt og tjener rigtig gode penge, så neutraliseres den kognitive afstand fuldstændigt. Hvorfor gør den det? Hvad er det, pengene signalerer til hende? De signalerer organisatorisk overskud. Datteren ser, at der er ressourcer, muskler og kapital nok til, at hun kan bringe sine hurtige, dynamiske tech-evner hjem og transformere virksomheden indenfra. Fundamentet er stærkt nok til hendes idéer. Det giver jo ufattelig god mening. Hvis vi så skal koge alt det her fantastiske data ned, hvad er nøgleresultaterne så for de forældre og børn, der står i det her lige nu? For praktikerne, forældrene, betyder det, at de skal tage nogle meget åbne snakke om fremtiden. De bør ikke se børnenes egne startups som et svigt af familien, men som en fuldstændig uvurderlig træningslejr. Men de skal vel også forstå alvoren af barnets succes? Absolut. Forældrene skal forstå, at de nu skal gøre familievirksomheden attraktiv og profitabel nok til at kunne konkurrere med børnenes egne succeser. Pligtfølelse rækker ikke længere. For akademikerne rykker den her artikel også ved hele opfattelsen af successionsforskning. Hvordan tænker du specifikt på det? Den kobler successionsforskning sammen med transgenerationelt iværksætteri. Vi skal tænke familier som porteføljer af muligheder, der krydser over generationer, frem for at se valget som et fastlåst enten-eller. Det åbner jo op for et hav af nysgerrige spørgsmål. Altså, hvordan påvirker den her vilde iværksætterbaggrund egentlig den måde, arvingen leder familievirksomheden på, efter de så endelig overtager? Bringer de radikal innovation med sig? Ja, og skaber de gnidninger med den eksisterende bestyrelse, der er meget at tage fat på. Og noget andet, jeg tænker på, gælder den her logik overhovedet i kulturer, hvor pligt over for familien vejer utrolig meget tungere end personlig karriere? For eksempel i Asien eller Mellemøsten. Det er enormt vigtige spørgsmål til fremtidig forskning. Det svenske laboratorium er unikt, men vi mangler at teste det globalt. Helt sikkert. Og det leder os faktisk hen til en lidt provokerende, afsluttende tanke, som du, kære lytter, kan tage med dig i dag. For når man ser på alt det her, måske er den ultimative test af en familievirksomhedsarv slet ikke, om de krampagtigt formår at holde deres børn lukket inde bag murene. Nej, det tror jeg, vi kan konkludere, at det bestemt ikke er. Nej vel. Måske er den sande arv at give børnene selvtilliden og de rå kompetencer til at erobre verden fuldstændig på egen hånd, og samtidig skabe et fundament derhjemme, der er så stærkt og så meningsfuldt, at de en dag af egen fri vilje vælger at vende hjem. Tusind tak for din tid, og tak for selskabet.